हेलो एंड वेलकम टू डू आई लाइक इट, अ शो जहां हम हर बात पे बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रणदीप हुडा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का ट्रेलर आया एंड द इंटरनेट अगेन गॉट फिल्ड विद कॉन्वर्सेशंस ऑन वेदर ही वाज अ नेशनल हीरो और अ कावर्ड। इज दिस फिल्म अनदर प्रोपेगेंडा और विल इट बी एन इंटेंस डाइव इनटू अ कंट्रोवर्शियल माइंड? अब देखो, मैं इस कॉन्वर्सेशन में तो भाई जा ही नहीं रहा। देयर आर मोर इंटेलिजेंट पीपल देन मी हु हैव डन देयर ड्यू रिसर्च हु विल टेल यू. But the film did get me thinking about one thing. See, there's no doubt that Randeep Hooda is an exceptional actor, very intense in thrillers and dramas. But the question is, will he work as a director with such a polarizing film? And that got me thinking about some other actors who sat behind the camera and made some exceptional films. देखो यार, हॉलीवुड में तो there are plenty examples of actor directors like Bradley Cooper, Clint Eastwood, Ben Affleck, Jordan Peele, Greta Gerwig, Donald Glover, etc. बट क्या हमारे यहाँ भी ऐसा होता है? Let us find out. In this episode, I'll talk about some of the best actors turned directors and how skillfully they juggled between multiple roles. Now, I won't be talking about people like Kamal Haasan, Rishabh Shetty and Rajat Kapoor who have been actor directors pretty much from the start. मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका प्राइमरी काम एक्टिंग था, but later they delved into directing for a film or two. And before I start with my picks, I just want to mention one film I wish I could include on this list, but it just hasn't aged well. होता तो क्या होता by Naseeruddin Shah. The film stars Irfan Khan, Paresh Rawal, Konkona Sen Sharma, Jimmy Shergill and some other zabardast actors. It is about some strangers who are stuck on the plane that crashes into the Twin Towers on 9/11. An exciting premise, but it fell prey to the early 2000s. A weird time जहाँ पे बॉलीवुड का थोड़ा existential crisis चल रहा था शायद, कि हमें कमर्शियल बनना है या स्टोरी टेलिंग करनी है, लिपसिंग सॉन्ग्स चाहिए या नहीं, फिल्म पे शूट करना है, डिजिटल. It was just a mishmash. Somebody please remake that film keeping all of these things in mind. बहुत बढ़िया सीन हो जाएगा. But yes, now let's jump into the main list. First up, there is a weird pick. Weird as in ये मेरा ना थोड़ा बचपन का प्यार है. मैंने ये फिल्म शायद टीवी पे 10,000 बार से ज़्यादा देखी होगी. And it's a personal soft corner. The film I'm talking about is the 2002 film directed by Anupam Kher, Om Jai Jagadish. अब ये फिल्म आज देखो तो अजीब ही लगती है with its outdated messaging and melodrama. But at that time, it was the favorite thing to watch. As a middle-class Indian kid, pre-Friends and the onslaught of Bollywood, Om Jai Jagadish, Pardes and Yadev were my only exposure to Western culture. Coca-Cola, fast cars, Vegas, lighte, ekdam computers, capitalism, advertising. It was a fun ride. Even the music was fab. वो गाना याद है? प्यार का मतलब रब 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 होता है. भाई, it's such a banger. I still remember that final bidding war between Parmeet and the three brothers, जहाँ पे as the value increases, the brothers come कि भाई मैंने गाड़ी बनाई है, मैंने अपनी म्यूजिक कंपनी बनाई है. And end का वो रिवील कि शांति विला की जो वैल्यू है वो अभिषेक बच्चन उसी प्राइस पे अपना सॉफ्टवेयर भेजेगा. ओहो, मैं और मेरी दादी हर बार इस सीन पे ट्रिप करते थे. अभी मैं रिसेंटली कुछ क्लिप्स देख रहा था इस फिल्म की एंड ऑब्वियसली इट्स नो गॉडफादर, बट यार थोड़ी वर्क तो करती है. इट्स अ परफेक्ट नॉस्टैल्जिया वॉच इफ यू आर अ 2000s kid. Next up, it is sort of a draw between Seema Pahwa and R. Madhavan for their debut directorial films Ramprasad Ki Tehrvi and Rocketry. Both films had flair, a heart that was in the right place, बट दोनों ही फिल्म्स में यार एक एक चीज़ मिसिंग लगी मुझे. इन रामप्रसाद की तेहरवी, द कोर आइडिया ऑफ अ फ्यूनरल एक्सपोजिंग द क्रैक्स इन अ डिस्फंक्शनल फैमिली and then later bringing it together, it was so soft. But I felt that even after a stellar star cast, the performances weren't impactful enough to get the point across. और वो डेब्यू फिल्म में तो थोड़ा ऐसा भूल चूक हो गया वाली फील आ रही थी मेरे को. And for Madhavan's Rocketry, the actor just didn't fit the titular part. I know that as a person, Madhavan has that scientific, rigor, and he must have researched the part thoroughly, but it just didn't translate on screen. And the final act was very choppily written and performed. But nevertheless, both films were solid debuts by two insane actors, and I'm looking forward to their next directorial ventures. For the third place, I got Konkona Sen Sharma with Death in the Gunj and her short film In Lust Stories 2. Oh bhai, where do I start? Death in the Gunj was such an atmospheric, eerie, and like chilly film. मतलब मैं जब भी वो फिल्म इमेजिन करता हूँ, मेरे को ठंड की फीलिंग आती है for some reason. It's such a well-made thriller. Unlike the previous picks, कोई देख के ये नहीं बता सकता कि भाई ये किसी की पहली फिल्म है. Again, a beautiful ensemble where everyone did their part to perfection. And the Lust Story short was a pure masterclass in visual storytelling. The way these shots were blocked, the performances of course, and the dialogues. सब में एक वो एक्सेलेंस का टच है जो वो फ्रेंच शेफ्स में होता है ना, खाना बनाने के बाद जो ऐसे करते हैं, वो वाली बात.
You notice कि इन दोनों films के बारे में I've said such vague things ना. But that's because number one, the craft is absolutely on point. I don't have anything that I can add to it. And number two, these films really make me feel very abstract and ऐसे textured feeling. एकदम मतलब अच्छी है, गंदी है, टाइम पास है वाला मामला नहीं है इन सब. Second place पे है नंदिता दास for her soul crushing फिराक and one of the most aesthetic Hindi films I've ever seen, मंटो. दोनों फिल्म में इतनी पॉलिटिकली रेलिवेंट है, तुम उन्हें देख के उस टाइम की पॉलिटिक्स को एकदम परफेक्टली गेज कर सकते हो, like a time capsule. While Firaaq explores the volatile tension of common people after the 2002 Godhra riots, Manto talks about today. Like literally ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम में पिक्चर सेट है. अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपका समाज ही नाकाबिल बर्दाश्त है. Look me in the eyes and tell me that the same is not happening today. As a writer and musician myself, I totally connect with Manto, played beautifully by Nawaz. कैसे पार्टीशन के दौरान मंटो और उसकी क्रिएशंस धीरे धीरे कन्वर्ज करते हैं. जस्ट लाइक इन रजत कपूर आर के डिड मंटो क्रिएट टोबा टेक सिंह और डिड टोबा टेक सिंह क्रिएट हिमसेल्फ, गिविंग अ न्यू लाइफ टू हिज क्रिएटर. And even other than the intense political undertones, it is a keen exploration of art and what impact does the environment has on its artist. वो saying है ना, in order for me to write poetry that's not political, I must listen to the birds, and in order to listen to the birds, the warplanes must be silent. Nandita Das's Manto is a chilling exploration of that. And finally, my favorite film directed by an actor is none other than Taare Zameen Par, directed by Aamir Khan. I think 2000s and early 2010s का आमिर खान was the most influential figure in Indian cinema and Indian society of that time. लगान और दिल चाहता है ने हिंदी सिनेमा में पैराडाइम शिफ्ट लाया. रंग दे बसंती के गाने और सीन्स आज भी प्रोटेस्ट्स और स्टूडेंट मूवमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. 3 Idiots देख के मेरे जैसे लोगों ने इंजीनियरिंग की रेस छोड़ी. एंड गजनी ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द 100 करोड़ इन इंडिया, जिसकी वजह से आज भी पिक्चर की क्वालिटी ही नहीं, उनके डे वन कलेक्शंस की बातें होती है. The man is a true cultural genius. But one of his most important contributions to Indian society, according to me, is his 2007 film तारे ज़मीन पर. I remember मैं शायद 8th या 9th में था और एग्जाम टाइम पे I started noticing कि क्लास के कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है. They write their exams in a different room और invigilators उनकी थोड़ी हेल्प कर रही हैं, आंसर्स वगैरह प्रॉम्प्ट कर देती हैं. And when I asked around, they were like, यार हम dyslexic students हैं तो हम उनके साथ पेपर देते हैं, हमारा पेपर अलग से होता है. And of course the stupid 12-year-old me was like, how can I also become dyslexic? मुझे भी खुला होके एकदम चीटिंग करनी है. But now that I look back, it was probably the first time educational institutions started thinking about children with different learning methods. फिर उसके बाद स्मार्ट क्लासेज आई, ऑडियो विजुअल लर्निंग, ड्रामेटिक्स करके लोग हिस्ट्री सीख रहे हैं, ये सब धीरे धीरे होने लगा. एंड अचानक से देयर सीम्ड लाइक this awareness of mental health in both children and also in adults who still don't have a conception of it. I still remember the first time जब मैंने घर के कुछ बड़े बूढ़े लोगों को अपने mental disorders के बारे में समझाने की कोशिश करी. I used the तारे ज़मीन पर analogy कि इस गेम पे जो जापानीज में लिखा है वो पढ़ के दिखाओ, आप नखरे कर रहे हो, आपका रवैया ठीक नहीं है. And they were like कि भाई मैं जापानीज कैसे पढ़ूँ? I still cried that scene. Such a tender and accessible way of explaining a disorder to people. And as I said in another episode of this podcast, ये मेरी theory है एक कि if Aamir Khan would have completely turned director after Taare Zameen Par, and not even director, मतलब he obviously would have acted, he's a good actor, but if he would have focused more on developing films with his crew of Advait Chandan, Kiran Rao, Ram Sampath, etc. He has such a great group of filmmakers. His career would have been something else. I honestly think Aamir Khan is a better director than an actor. His imprint on his films is just something else. He's a great directing mind, so I think he should do it more. And yes, this was my list for some amazing actor turned directors. I'll obviously be on the lookout for Randeep Hooda's Veer Savarkar film, just like you all. Do you think it would deserve a spot on this list, or will it be relegated to actor-director disasters like Ajuba, Aab, Lord Chale and Ghayal 2? Tell us in the comments below or hit me up on my socials. I'd love to chat with you. This was Prateek and I'll see you in the next one.